Dear viewers and learners, Assalamu alaikum. Today's video is on fundamental rights. Yim saat fundamental rights is kath karo fundamental rights hasa tim basic rights yim zan enshrine ch karan Constitution of India to its all citizens. अगर अस वो यम फंडामेंटल राइट्स यम जन ऑफर गसान चाहे ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया चाहे इन इंडिविजुअली दिमो या कलेक्टिवली दिमो यम फंडामेंटल राइट्स यम डिवाइड करान इनटू 6 कैटेगरीज गोडनुक फंडामेंटल राइट ये लिखो राइट टू इक्वालिटी ये जन आर्टिकल 14 to 18 यानी आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तम डील करान विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव मज राइट टू इक्वालिटी गो गोडनुक फंडामेंटल राइट इथे कन राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 पे 22 तान रल इथे कन राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तथ लगान आर्टिकल 23 पे बराबर आर्टिकल 24 यानी आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 इथे कन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल 25 पे बराबर आर्टिकल 28 तान डील करान इथे कन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 इथे कन ब्या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये आर्टिकल 32 वनान ये जन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यमिस लेखान आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तम वोलमुत अथ आर्टिकलस हसा वनो आल्सो कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो फंडामेंटल राइट्स बनामुत क्वेश्चन टाइपस पे लिखो गोडनुक क्वेश्चन which part of the constitution deals with fundamental rights fundamental rights usan constitution of india iman lekhan basic rights iman fundamental rights yat kus karan deal part 3rd यानी आर्टिकल 12 to 35 डील गसान फंडामेंटल राइट्स यम फंडामेंटल राइट्स वन गोडनथी यम डिवाइड करान इनटू 6 कैटेगरीज यानी तिमन से कुस यानी पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यथ मज फॉल गसान आर्टिकल 12 पे बराबर आर्टिकल 35 तान जो जन डील करान फंडामेंटल राइटन से क्वेश्चन नंबर 2 who has been vested with the power to ensure the enforcement of fundamental rights through the constitution कुछ है कि करित एनश्योर करित ये पावर कमी कॉन्स्टिट्यूशनस में यम फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करित यानी एपेक्स बॉडी अकिस लेखान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट यानी सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट अगर कुन जाए डिप्लीशन गमन फंडामेंटल राइट्स आम प्रोवाइड कर टू ऑल द सिटीजन्स यानी इंडिविजुअली तम कलेक्टिवली तम सात रेमिडी दिवान सेफ गार्ड करान तवे लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान तम वो जन आर्टिकल 32 ये होड़ गसान राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज यम सात जरूरत तथ लेखान सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट हसा प्रोवाइड करान एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ब्याक इथे वन लाइनर क्वेश्चन राइट टू इक्वालिटी हैज बीन एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल कत आर्टिकलस अंडर इक्वालिटी यानी इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 तान आर्टिकल 14 to 18 in matter of public employment which article provides for equality of opportunity to all Indian citizens यम सात एम्प्लॉयमेंट कत करान खासकर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कुस आर्टिकल डील करान जन अपॉर्चुनिटी कर प्रोवाइड यम तन इंडियन सिटीजन ऑल सिटीजन्स तिमन कुस कर प्रोवाइड आर्टिकल 16 यानी आर्टिकल 16 1 पार्ट 1 आर्टिकल 16 2 तमिक पार्ट 2 आर्टिकल 16 1 आर्टिकल 16 2 यानी यम करान आर्टिकल कस डील पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इथे कन ब्याक आर्टिकल प्रोविजन रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी यानी एबॉलिश करो अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी गसान अनटचेबिलिटी तथ कुछ हैव बीन मेड अंडर आर्टिकल 17 हसा खत्म करान ये अनटचेबिलिटी फ्रॉम इंडिया आर्टिकल 18 is related to abolition of titles यानी titles यम जन फॉरेन हसा इंडियन सिटीजन हे कहीं ते टाइटल रटित यम जन ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश रूलस मज टाइटल्स दिन इत सर महाराजा नवाब बहादुर खान यम टाइटल्स नसा हेको नो
ये इंडियन सिटीजन रटित कहें वन टाइटल तिम टाइटल हसा गए खत्म कर कम थ्रू आर्टिकल 18 थ्रू तवे लिखान एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी यम करो खत्म यम टाइटल यम जन ब्रिटिश पीरियडस मज दिन तम ना हेको कहन ते रिसीव कर इंडियन सिटीजन यम टाइटल्स सह कम कोर खत्म सह कोर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, under which article it has been provided that a person accused of any crime shall not be forced to become a witness against himself, self incrimination. यानी युस ये आर्टिकल आर्टिकल 20C यानी आर्टिकल 20C अकिस पर्सनस युस जन एक्यूज यी कह क्राइम कर सह ना हेको फोर्स कर सह कर पाने विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ या लिखान सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी कम थ्रू करो यह खत्म आर्टिकल 20C, which article provides for provision right against exploitation of children. यथ लिखान चाइल्ड लेबर यानी चाइल्ड लेबर कुस कर बच्चा मजदूरी कुस सेफ गार्डिंग कर तथ आर्टिकल 24 यानी आर्टिकल 24 करान युस तह बच्चे 14 years एज अंडर 14 years एज 6 to 14 यानी उहद पीरियड यह हसा गन लबन स्कूलस मज यानी यथ लिखान यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कंपलसरी एजुकेशन सह हसा गन लबन मगर यह गि मजदूरी गन कुन जाए यह जन हेजर्डस लाइफ बनान यानी बच्चे मजदूरी तम खतर आर्टिकल 24 तवे एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इथे कन ब्या बुद्धिज्म, जैनिज्म तो सिखिज्म यम जन यम रिलीजन यम हसा कर इनक्लूड अंडर द टर्म हिंदू मेंशनड अंडर कत आर्टिकल तहत मेंशन कर इंडिया यानी आर्टिकल 25 जन सह करान यथ लिख राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी आर्टिकल 25 पे बराबर 28 तान ये बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म have been included under term Hindu mentioned under article कत आर्टिकल तहत आर्टिकल 25 of the Constitution of India. Right to property is currently regarded as legal right. Right to property legal right यथ लिखान constitutional right. Right to information happens to be fundamental right provided under कत तहत आव ये यानी information provide करें हासिल कर ग्राहक करे इंफॉर्मेशन हासिल यानी तथ लिखान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाम 2005 मज इथे कन विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन हसा दिमो यम जन इकनॉमिकली वीकर सेक्शन यथ लिखान EWS इकनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी मन तिमन कित हको रिजर्वेशन दित कत तहत दिमो तिम रिजर्वेशन आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) तहत दिमो तिमन रिजर्वेशन कुन जाए कुन गवर्नमेंट सेक्टरस मज यानी यम हसा इकनॉमिकली हसा वीकर सेक्शन यानी लिखान डेप्रिव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मगर प्रेजेंटली लिखान EWS which articles cannot be suspended during emergency यानी आर्टिकल 352 कुछ आर्टिकल सस्पेंड गसान during emergency आर्टिकल सह आर्टिकल 352 यानी आर्टिकल 20 and 21 right to life and personal liberty यानी आर्टिकल 21 यानी right to life आर्टिकल 20 and personal liberty आर्टिकल 21 यम सस्पेंड गसान during emergency के इथे कन why are the rights mentioned under part 3rd of the constitution referred as fundamental rights यमन क्या लिखान fundamental rights part of 3rd of the constitution because answer because they are justiciable in nature इथे कन in which year was the right to property under article 31 removed as a fundamental right making it a legal right यानी you see राइट टू प्रॉपर्टी यह फंडामेंटल राइट पता कोर रिमूव यह बनोगा लीगल राइट यानी कत एमेंडमेंटस तहत यानी 1978 यथ मज लिखान एमेंडमेंट नंबर 44th एमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्टस तहत हसा यह रिमूव कर यह बनो एज ए लीगल राइट। What is meant by the justicable nature of fundamental rights? लिख फंडामेंटल राइट्स हसा justicable यानी because they are justicable in nature ये वनो ये क्वेश्चन what is meant by the justicable nature of fundamental rights यानी justicable nature of fundamental rights क्या गो
one can move to court for enforcement of these rights under Article 32. यानी कह कि कोर्टस कुन मूव कर एनफोर्स लागू कर आर्टिकल अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट गसान प्रोवाइड कर यानी आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट कर सेफ गार्ड एंड आर्टिकल 226 यानी टू हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर फंडामेंटल राइट्स. In which year Supreme Court declared that a constitutional amendment can be challenged on grounds of violation of basic structure of constitution. अगर violate गसान युस जन structure of constitution सो कुछ amendment तथ केस लिखान 1973 मं किशविनाथ भारती केस युस जन 1973 मं गोमुत यानी in which year Supreme Court declared कार कोर declare constitutional amendment तथ लिखान 1973 किशव आनंद भारती केस. Which case provided for the doctrine of basic structure of the constitution. Kishwanath Bharati case 1973 one line answer. Which article under fundamental rights provides for judicial review of all the legislation. यानी जुडिशल रिव्यू वुचन तथ कुछ आर्टिकल लगान आर्टिकल 13 करान प्रोवाइड जुडिशल रिव्यू. The notion of judicial review is taken from which country? कम कंट्री पे आमुत तुलन लिखान गथी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह बैग ऑफ बोरोविंग्स तवे लिखान यानी कम आर्टिकल कम कंट्री पे आव यह तुलन जुडिशल रिव्यू यह तुलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूसा. What exactly meant by equality before law as under आर्टिकल 14 करान equality before law अत मज क्या मेंशन करान all persons are equal in the eyes of law. Jkssb gave the principles related to rule of law. यानी कुछ principles related to rule of law सो Jkssb gave the principles related to rule of law. Which article of the Indian Constitution provides for prohibition of discrimination by state and individual against any citizen on certain grounds. यानी prohibition करान discrimination कर इंडिविजुअल सर्टन ग्राउंडन पे तथ करान डील आर्टिकल 15 करान डिस्क्रिमिनेशन हेको तथ डील करान आर्टिकल 15. Under which article the state has the power to make special provisions for women and children as exceptions to prohibition of discrimination. यानी discrimination special power यूजन prohibition for provisions for women and children as exceptions to prohibition of discrimination. Article 15.3 यानी Article 15.3. So on today's videos यह on fundamental rights यह lecture number 1. Next video नमो बराबर fundamental rights. God bless you.